8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. This chlorine is also fulfilled. But beryllium is getting how much? Beryllium is getting just 4. So that is why this type of compound is known as electron deficient compound. What it is commonly known as? It is known as electron deficient compound. Clear? If you can see one more, अगर हम लोग एग्जांपल ले लें तो बना के दिखाइए AlCl3 AlCl3 बोरॉन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4 इलेक्ट्रॉन्स इफ यू सी AlCl3 अगर आप AlCl3 देखेंगे तो इट विल बी लाइक दिस क्लोरीन का एक एक है ना मैं यहाँ बता रहा हूँ देख लीजिए क्लोरीन का एक एक एल्यूमिनियम का 3 तो एल्यूमिनियम इज गेटिंग हाउ मच around 6 electrons. So that is why even अगर आप देखेंगे एल्यूमिनियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है क्या नहीं हो रहा. So that is why all these compounds they are known as electron deficient compounds. There is another category of the compounds in which the central atom has more than 8 electrons. The central atom has more than 8 electrons and these are known as hypervalent compounds. For example, if you make it out PCl5 बना के देखिए PCl5 if you make out PCl5 अगर आप ट्राई करेंगे तो PCl5 कैसे बनेगा देखिए PCl5 means phosphorus how many valence electron 5 तो chlorine 5 1 2 3 and then 1 4 and 1 5 chlorine is 7 1 2 3 4 5 6 7 and phosphorus is 5 1 here 1 here 1 here 1 here and 1 here और chlorine का एक पकड़ ले चलो है ना तो you will find that overall phosphorus getting 2 2 4 2 6 2 8 और ये 2 10 so phosphorus is getting around 10 electrons more than 8 and that is why here this PCl5 is a hypervalent compound. What it is? It is a hypervalent compound. Am I right? Clear? This is बहुत ध्यान से समझना है बहुत बढ़िया चीज मैं आपको बता रहा हूँ एंड ये फिजिकल केमिस्ट्री या केमिकल बॉन्डिंग का हार्ट है and as I am telling you why it is called as heart because I am telling you about Vesper theory valence shell electron pair repulsion and valence shell electron pair repulsion theory is needed in almost many chapters of physical chemistry whether it is coordination many chapters I should say so you must remember that what is valence shell electron pair repulsion theory or Vesper theory. Clear? चलिए थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करते हैं कल मैं tomorrow's class जब मैं बात कर रहा हूँ वेस्पर थ्योरी की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी अभी हमने थोड़ी देर पहले लुईस स्ट्रक्चर के बारे में देखा लुईस स्ट्रक्चर हम क्यों पढ़ते हैं because Lewis structure tells us directly or indirectly tells us about the shape of the molecules but Lewis structure cannot explain all the shape of all the molecules okay that is why एक रेमेडियल पार्ट निकला कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स को हम कैसे एक्सप्लेन करें एंड नो डाउट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये थ्योरी जो है वो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में काफी कुछ बताता है बट इसका कंसेप्ट थ्योरी जानने से पहले इसका कंसेप्ट समझना है व्हाट डज दिस कंसेप्ट सेज ठीक है यू विल फाइंड जैसे व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू विविडली यू विल फाइंड सपोज अ सेंट्रल एटम is linked with two other covalently bonded atoms ठीक है right and they have been formed by how they have been formed by sharing of electrons is this clear
तो central atom is surrounded by shared pair of electron, and this shared pair of electron, they are also being called as bond pairs, BP. Am I right or not? ठीक है ना? अगर बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है तो बट नेचुरली कुछ लोन पेयर्स भी होंगे. There are two kind of electron pairs. One is the lone pair and another one is the bond pair. Obviously, with BP, there may be some lone pair also being present between these central atom as well as the shared atoms. Is this clear? Right? And you will find lone pair, जैसे मैंने बताया, they do not take part in the bonding. They have not taken part in the bonding. Clear? The stability of a molecule, any molecule, it demands minimum energy. कोई भी मॉलिक्यूल तभी स्टेबल है जब उसमें मिनिमम, इट शुड हैव मिनिमम एनर्जी. क्लियर? अगर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है, जो इनके बीच में है आपस में, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दिस क्लियर, अगर ये इस एटम के एकदम क्लोज आ गए तो ऑब्वियसली उनमें क्या होगा? जैसे जैसे क्लोज आते हैं, ये क्या होगा? रिपल्शन. They will create what? It will create repulsion. Here also and here also. It will create the repulsion. Clear? और आपको मैंने बताया था एक बार कि जब जब attraction होता है, there is loss of energy, and whenever there is repulsion, there is gain of energy. तो obviously जब इनमें repulsion हो रहा है, तो what it will, the molecule will develop what? It will develop gain of energy, a maximum gain of energy. Clear? लेकिन ये तब होगा जब इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो रहे हैं? क्लोज आ रहे हैं, तो देयर इज गेन ऑफ एनर्जी. लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पेयर काफी दूर चले गए, सपोज इफ द इलेक्ट्रॉन पेयर दे मूव डिस्टेंस और फार अपार्ट, क्लियर, तो इनके बीच में रिपल्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. द रिपल्शन विल बी लेस and the energy of the molecule again will be low. What? The energy of the molecule again will be low. इसी आइडिया पे हमने वेस्पर थ्योरी फ्रेम किया. What does Vesper theory says? The electron pair surrounding the central atom, the electron pair which surrounds the central atom, they repel one another. These electron pairs, they repel one another and they move so far apart. वो इतनी दूर चले जाते हैं. They move so far apart that further what you call as repulsion उनके बीच में possible नहीं. तो उसका रिजल्ट क्या होता है? मॉलिक्यूल डेवलप्स, क्या मैंने बताया था, अगर वो दूर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल विल डेवलप मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी. द मॉलिक्यूल विल डेवलप मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी. एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन. क्लियर? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब रिपल्शन होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, they take up a definite position. These electron pairs, they take up definite positions. Clear? That is why the molecule, it develops a definite shape or a geometry. The molecule, it develops a definite shape or what you readily call as geometry. That is the reason that the molecule, it develops definite shape or geometry. एक चीज और मैं बता दूं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इट्स एन assumption theory. assumption का मतलब हम अंदाजे से बता रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट आप नहीं हो सकते. क्लियर? तो इससे हमको क्या क्या बेनिफिट होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से? सबसे पहली बात, फ्रॉम दिस थ्योरी we are able to explain what? We are able to explain the shape or the geometry of the molecule. तो ये याद रखना है that valence shell electron pair repulsion theory, it tells you the shape of a molecule. और ये पहली चीज क्या बताता है? अगर shape of the molecule बताएगा, जो इसको बता देगा वो आई होप उसने थोड़ा सा कंसेप्ट समझा है. ये पहला शेप कौन सा बता रहा है? इट्स अ लीनियर शेप. व्हाट इट इज? लीनियर. यस. तो वेस्पर थ्योरी जो सबसे पहला शेप आपको बताता है, the shape of a molecule which contains only two atoms is always a linear. Clear?
और अगर किसी मॉलिक्यूल्स में 3 या 3 से ज्यादा एटम्स है, अगर 3 या 3 से ज्यादा एटम है, इज दिस क्लियर, राइट? तो उसमें हम लोग जो सेंट्रल एटम है, जो बीच वाला एटम है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल एटम. व्हाट इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल एटम. क्लियर? और जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरीके से लिंक्ड है, चलो ये कौन सा शेप है बताओ, अगर आप बता पाए तो. यू हैव वन, मैंने बोला 2 से ज्यादा, तो दिस इज it is triangular planar. First one was linear and this is triangular planar. Getting it? और total number of electron pairs इसमें कितने होंगे? देखिएगा 1, 2 and 6. So the total number of electron pair is 6. In the same way, एक मैं आपको रूल बता रहा हूँ. If the central atom is linked to similar atoms, ध्यान से सुनना. If the central atom, suppose in case, if the central atom is linked to similar atoms, ठीक है, and it is surrounded by bond pair electron only. If I have a central atom A and it is linked to similar atom B and B and it is surrounded by bond pairs, not lone pairs, it is surrounded by only bond pairs, तो उनके बीच में जो रिपल्शन होगा वो कैसा होगा? जो रिपल्शन यहाँ हो रहा है वही रिपल्शन यहाँ होगा. That means they will have similar repulsions. What they will have? Yes, the entire molecule will have similar repulsions इनमें होगा. Clear? और जब इस तरह के similar repulsions होंगे तो molecule का shape कैसा हो जाएगा? It will be, जैसा मैंने आपको बताया था, it will be symmetrical. It will be, the shape of the molecule will be symmetrical. इसको हम लोग regular geometry भी बोलते हैं. This is also known as regular geometry. Okay? The molecule will be symmetrical or it will have the regular geometry. ये condition कब थी? जब दोनों atoms कौन हैं? Similar. When both the atoms they are similar in nature. लेकिन अगर central atom is linked to different atoms, अगर ये condition reverse हो जाए, if the central atom, as I told you, if the central atom is linked to different atoms and it is surrounded by bond pairs, अभी क्या था? केवल bond pair था. If the central atom is linked to different atom, ठीक है, right? Clear? And it is surrounded by both bond pair as well as lone pair. It is surrounded by what? Bond pair as well as lone pair. If the central atom is linked to two different type of the atoms and it is surrounded by both bond pair as well as lone pair, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? Obviously it will be unsymmetrical. What it will be? Unsymmetrical, or it can be called as distorted geometry. What it will be called as? Distorted. Yes, it will be what you rightly call as, it will be finally, it will be a distorted geometry. What it will be? It will be a distorted geometry. ठीक है? On that basis, we have the order of repulsions. इनके बीच में, between the electron pairs, we have an order of the repulsion. और ये शायद आपको याद होगा, कौन सा? Lone pair, bond pair, then lone pair, bond pair, and then bond pair. You must remember. Clear? This is the order of the geometry or order of the valence electron pair repulsion theory. This is the order of repulsion between the electron pairs. What this is? Order of repulsion between the electron pairs. एक बात और वेस्पर थ्योरी होती है, वो ये बोलता है कि जो exact shape of molecules, what does it say? The exact shape of the molecule, ये डिपेंड करता है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, किसके आसपास? अराउंड द सेंट्रल एटम. सो द एग्जैक्ट शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल, इट डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट आर प्रेजेंट ओवर द सेंट्रल एटम. क्लियर? और इसी के बेसिस पे हमारे पास में वेस्पर थ्योरी में बहुत सारे शेप्स. तो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे शेप्स के बारे में.